सो वी जस्ट गॉट डन द 5th टेस्ट फॉर मशीन लर्निंग, तो मज़ा ही आ गया सब, बहुत अच्छा किया। अब मेरा प्लान है कि आई वांट टू गेट माय iPhone 11 फिक्स। एक और इशू आ गया, वो जाके आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है। Installation in Malta is always the best. So I'm basically at the same mall जहाँ मैं पहले आया था to get my MacBook Pro and also my iPhone 10R fix, तो वहाँ पे दोबारा आना पड़ रहा है। So the issue that I have in my iPhone 11 is the same one, that's a microphone issue। तो मैंने कभी भी फ़ोन को गिराया नहीं और कभी पानी में नहीं फेंका जानबूझकर, फिर भी मतलब माइक्रोफोन से आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आती है। It is like negligible sound coming from the earpiece actually, not from the microphone। So earpiece is not working and also the microphone sometimes breaks। So the same problem, they're gonna probably replace the display, but I'm not sure if they're gonna do it for free or it's an accidental damage। तो फिर जाके पता चलेगा। I have an appointment. Singh, SINGH. So before I talk about my MacBook Pro, I really want to share what happened with my iPhone 11. So they first of all said I'm very lucky because this is like last hour, 8 PM to 9 PM. It closes at 9 PM and they usually don't accept any iPhone or anything for repair because they also want to go back home. But they accepted my phone because there was not a single phone on the shelf for repair. So I'm lucky that I'll get it back in few minutes. And I know you must be curious how I'm getting the MacBook Pro, the 2019 edition for free. I'll explain that once I unbox it at home. Yeah, I have text messages too. Let's try it now. And then sign now. Sign here. That's you picked up your phone and it's all working. Yeah, it still got declined. It's getting declined. Wow. So this is like my case? No, that's from Sorry. That's your old screen Oh. from the phone. Oh, okay, cool. So my all data is copied, so I can give it to you now. And I don't need to like clear anything. I can just... Let's see. But I mean, if do you have any other bag like, because when I can get another one. Yeah, no, not Apple bag, like any other bag, so that it's not visible, because I'll be going by Marta. I'm worried someone steals. So because of so many things I'm carrying, I have to vlog only with my GoPro Max, and I'm super excited to unbox it at home. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मार्टा में नहीं आना चाहिए था। So finally made it with this 16-inch MacBook Pro, but सबसे पहले बताता हूँ, it was a very bad experience जब मैं ट्रेन से वापस आ रहा था। सबसे पहले तो मुझे बात माननी चाहिए थी ऑफ Apple सर्विस सेंटर और Apple शोरूम। सो मैंने उनसे बात की, दे सेड लाइक इट विल बी बेटर इफ आई गो बाय ऊबर बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अनसेफ टू गो बाय मार्टा एट लाइक 10 PM। तो वैसे भी पंजाब में कहते हैं सियाणिया दा क्या ते औलिया दा खादा पिछो पता चलता है। सो सेम थिंग हैपेंड। सो जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा, आफ्टर कपल ऑफ स्टेशन लेटर 2 to 5 people came. So I think that was a gang, and they were fighting as soon as they entered the train, and it was a very loud conversation, and then someone helped them quite a little bit, and also there was a small kid in the conversation too who was very loud and he was fighting too. And the bad thing is, the guy, one of the guy sat next to me and he took out something from his pocket, and that was apparently marijuana, because वो green color का drug था, most likely marijuana ही होना चाहिए। मैंने असलियत में देखा नहीं, but I've heard that it must be marijuana, so that got me more scared, and I had this बैग इन माई हैंड। तो आपको पता है, मैं मतलब मैकबुक प्रो मैंने अपने बैग में डाली हुई थी। मैंने उनसे कहा कि कोई और बैग दे दो, किसी को पता ना चले कि एप्पल का बैग है, लेकिन लोग मतलब चुरा सकते हैं, सब फिशी थिंग्स कैन हैपन। तो वैसे ही हुआ, जैसे मैं बाहर जाता, क्योंकि मैं डर गया, मेरे साथ मतलब कोई बैठा बंदा जिसके पॉकेट में मैरिजुआना है। मतलब मुझे उसी वक्त डर के बाहर नहीं लगना चाहिए था। उसने मतलब पूछा मुझसे, इज़ दैट डू यू हैव लाइक, मतलब इसके अंदर आईफोन है, मतलब क्या है क्या। सो आई शोड हिम लिटरली दैट इसके अंदर बुक्स और मतलब मेरा अम्ब्रेला और सामान
चलाना है, तो थोड़ा काम हुआ, बट लिटरली उसने मेरे हाथ पे हाथ रख लिया था और मैं डर गया यार कि मतलब चोरी ना हो जाए ये वो। और बाद में जब मैं बाहर भी निकला तो ही वॉज राइट बिहाइंड मी, मुझे लगा कि वो मेरा पीछा कर रहा है, पर बाहर आते ही आई मतलब रिकॉर्डेड, क्योंकि मैंने पीछे देखा कि अब कोई पीछा नहीं कर रहा है, और रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पीछे फिर से वो दिखा। आई हैड टू रन टू दिस लाइब्रेरी सो दैट आई एम एब्सोल्युटली सेफ। तो मुझे मतलब लग रहा है कि मतलब कि कुछ भी हो सकता है ट्रेन में, तो मुझे आगे से मतलब 10 PM के बाद या 9 PM के बाद कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इट्स सो अनसेफ हियर। और मुझे बुरा लग रहा है कि मतलब उस बच्चे का कसूर, मतलब स्मॉल किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ड्रग्स, सो दैट्स ऑल्सो बैड, बट एनी वे या इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सेफ। और मतलब आगे से ना हो, मुझे डर लगता है। बच्चे के पास मैंने ड्रग नहीं देखा, बट हो सकता है मुझे ग्रुप में लगा, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। बट नाउ लेट्स अनबॉक्स दिस 2019 16-inch MacBook Pro। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज कि जस्ट लाइक आईफोन, आपको कोई भी चाकू छुरी की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट पुल दिस अप। सो पहले जो 2018 MacBook Pro थी उसमें ये नहीं था, आई थिंक दे इंट्रोड्यूस्ड इट रिसेंटली, सो amazing experience. So talking about the specification, so this has 512 gigabyte वेरिएंट, जो सबसे सस्ते वाला ये वेरिएंट है, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ। तो वैसे भी ये मतलब फ्री है, मुझे रिफंड मिल जाएगा। सो द आइडिया इज दैट दे आस्क मी टू पे राइट नाउ, सो एज सुन एज आई गेट माई ओल्ड मैकबुक प्रो फिक्स। तो मतलब मैं गया अपने आईफोन को फिक्स कराने के लिए था, बट उन्होंने मुझे कहा कि आप लैपटॉप अगर अभी फिक्स कराना चाहते हो अभी करा लो। मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, फाइनल्स के बाद आऊँगा, बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन माई फाइनल एग्जाम्स एंड आई डोंट वांट टू लूज माई कंप्यूटर राइट नाउ। बट दे सेड लाइक हाउ अबाउट you buy a new computer and then return it within 2 to 3 weeks. वैसे उन्होंने कहा till 8th January I can easily return it and I will not have to pay a single amount as soon as I give it back to them. And I also got this like warranty, तो मैंने $300-400 ज़्यादा दे के warranty लिए. But the good thing is this is free for the next 2 to 3 weeks. I will not have to pay a single amount to use it for the next like couple of days or weeks. मैं मतलब जैसे ही मुझे नया लैपटॉप मिलेगा, मतलब मेरा पुराना लैपटॉप मिलेगा, मैं ये वापस कर दूंगा. And also in this box the contents are same, so Apple stickers, the same adapter. So this adapter is मतलब size same है पिछले जैसा. I can show you my old adapter too. So exactly same size, but it is 96 watt more than the previous charger and this type C cable. And मैं मतलब अभी बैक करके मुझे वापस देना है, तो मैं खोलना नहीं चाहता हूँ उन्हें, ऐसे कि ऐसे ही वापस करना चाहता हूँ. So let's also check out the stickers. So these are space gray stickers, different than the other stickers. So these are special ones. But I will have to return everything soon. So मैं सब कुछ ऐसे अभी पैक कर दूंगा. But the bad thing is कि मुझे final exam से पहले this MacBook Pro को दोबारा से setup करना पड़ेगा. So same plastic feel. Wow. Smells so good. Mind blowing. Wow. So the best thing is as soon as you open it, it starts to boot up on its own. Last time 2018 में यही हुआ था. Yeah, it started to boot up on its own. And in the meantime, जितनी देर तक setup complete होता है, I can show you the size difference. Unfortunately, मैंने 2018 Mac Pro तो दे दिया, so it is little bit bigger, very minor difference. So मैंने edge to edge attach कर दिया. You can only see like few centimeters, 1 or 2 centimeter difference here and 1 or 2 centimeter difference here. और मेरे पुराने MacBook Pro में problem ये थी कि the laptop had 3 issues. Number 1, trackpad issue. So number 1 issue was that कभी कभी मैं drag and drop कर रहा हूँ तो बहुत अजीब सी साउंड करता था और it doesn't used to like properly drag and drop, तो वो चल नहीं रहा था. Next issue was keyboard issue, just like previous video, same issue cleanup के बाद भी था. So I wanted my keyboard to be replaced. So and third issue was the display issue. It had 1 or 2 yellow spots here. They said कि pressure के कारण हुआ है and luckily it was in warranty, तो भी 1 साल भी नहीं हुआ. So they will be replacing the entire body. So entire bottom body including touch bar or trackpad, everything here, and also the display. So that's why it's gonna take like 3 to 5 days. तो जैसे मिलेगा मैं दिखा दूँगा. But for now I'm very excited to use this new computer. So I finally restored my backup from my MacBook Pro 2018 edition to 2019 edition. So that's the benefit of Apple's ecosystem, because the backup was pretty fast, and special thanks to this Sabrent's SSD. So Sabrent sent me their SSD, which is like as small as my finger or even
smaller or shorter in length of my finger. तो मज़ा ही आ गया. इसी के कारण I could back up in like 15-20 minutes, क्योंकि मैं गया तो iPhone 11 के लिए था और MacBook by chance ही रिपेयर के लिए मैंने दे दी. So they said if you can back up your MacBook by 9 p.m. then we will be able to give you a new one and we will be able to send it to repair. So that's why like I was able to use this SSD immediately. The speed was like 1 GB per second and it's faster than my Samsung's SSD. So this is also for me, both are free. So yeah, I won this in my research competition and I got this from Sabrent. So special thanks to them. This is mind blowing and this is the reason I have my MacBook Pro 2019 edition today. So now talking about this MacBook, so मैंने जैसे ही try की, I first tried the speaker and the microphone. I was blown away by that. Speaker is much better, not much better, but at least 10 to 20% better because I could see the significant improvement in bass and mid tones etc. मतलब मज़ा ज़्यादा आता है आवाज़ सुन के. और माइक्रोफोन मैंने अच्छे से टेस्ट नहीं किया. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द मैजिकल कीबोर्ड इज मच बेटर देन बिफोर. मतलब इतना मज़ा आता है ना. दिस इज सीजर मैकेनिज्म एंड इट इज़ लेस नॉइजी. और पिछला कीबोर्ड भी अच्छा था. आई रियली लाइक द कीबोर्ड बिफोर टू, बट बिकॉज ऑफ द इश्यूज द कीज वर रिपीटिंग सो मैनी टाइम्स. और ये सेकेंड टाइम इशू हुआ है. एंड ऑल्सो इफ़ यू नो द पॉलिसी ऑफ एप्पल, अगर उन्हें एक कंप्यूटर 3 बार रिपेयर करना पड़ता है, दे विल गिव यू अ रिप्लेसमेंट फॉर फ्री. सो इफ आई हैव टू गो देयर अगैन टू गेट माई MacBook Pro fix, there's a possibility कि I will get a free MacBook Pro as well. This is like free for 2 weeks, but later on once I give it back and get that back, और मुझे तो अगर दोबारा जाना पड़ा, then I'll get a new one, मतलब same computer for free as well, because this is close to that specification क्योंकि इसमें भी 512 gigs हैं और 2.6 core processor. Yeah, so it's similar specification, but this is faster because the graphics have been upgraded, so it is faster than 560x on my previous laptop. So it is just amazing. And also when I told them that my final exams are coming soon, they told me that ki get your MacBook Pro fixed right now because later on holiday season is coming, Thanksgiving, Christmas, so the repair might be delayed or it may take more time than usual. So that's the right time. And also ये laptop अभी भी आया, so I was very fond of trying it right now. The moment he told me, मतलब कोई employee इतना easily बताता नहीं है that you should get a new computer and return it after a month, but he was very nice enough to tell me, and he was also a student, so I'm very thankful to him. So it was a lot of fun. So that's pretty much it. Thank you so much for watching, and I will see you guys in the next one. Goodbye. And also, even though this MacBook Pro is bigger and around 300 pounds heavier, but it doesn't seem like that. It seems pretty much the same thick and also pretty much same weight क्योंकि मतलब बहुत कम difference है. So it is a big upgrade for me.